Assalamualaikum. My name is Shamsullah. आज का जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम, जो फर्स्ट ईयर के कोर्स में है। अब लाइसोसोम है क्या, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसका साइज कितना है, इसका फंक्शन क्या है हमारे सेल में और इसका स्ट्रक्चर, ये सारा जो है इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इससे जो बीमारियां होती है वो भी हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसी लाइसोसोम की मीनिंग को देखें तो लाइसोसोम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर टू नेम्स। लाइसो मीन्स split, derived from a Greek word which means also means digestion or digestive, and soma means body or vesicles. Lysosome first of all discovered by Dido in 1955 when he performed electron microscopy. He see cell under the electron microscope. Then he see some sort of vesicles around the nucleus. For example, this is the nucleus. Around the nucleus डिडो ने बहुत सारे वेसिकल्स ऐसे देखे जो सिर्फ इसी न्यूक्लियस को अराउंड करते थे। यहाँ पर these vesicles are bounded by the single membrane and also round and dense round and single membrane. तो इसी सिंगल मेम्ब्रेनस राउंडेड डेंस स्ट्रक्चर और वेसिकल को डिडो ने पेरीन्यूक्लियर वेसिकल्स बॉडी का नाम दिया। इसको सबसे पहले लाइसोसोम का नाम नहीं दिया गया था ना, इसको सबसे पहले डिडो ने पेरीन्यूक्लियर वेसिकल्स का नाम दिया। इसकी एक्टिविटी और इसकी फंक्शन की बुनियाद पे लाइसोसोम को लाइसोसोम का नाम दिया गया। उसी टाइम में there were two Greek words, lyso means splitting or digestive and soma means bodies or vesicles. अब इसको सुसाइडल सेक्स भी कहते हैं एंड स्कैवेंजर भी हम इसको कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्कैवेंजर। Lysosome is also called a suicide bags because it bursts inside the cells to digest all the cellular parts of itself. Got it? Therefore, it is called a suicide cells. And in other words, it is also called a molecular scavenger. Scavenger हम basically अखरोट को कहते हैं, अखरोट। Why it is called scavenger? आगे फंक्शन में हम एक को डिस्कस करेंगे। Lysosome. अब in 1974, Dido and Peredo were awarded by the Nobel Prize for such a huge discovery and for a huge explanation about the lysosome. अब lysosome है क्या? Lysosome is around dense single membrane bounded structure containing various type of digestive enzyme present in eukaryotic cytoplasm. Most of the animals and most of plants contain lysosomes, while bacteria, amoeba and some sort of lower plants do not contain any type of lysosomal bodies or lysosomal vesicles. Bacteria contain endonucleases enzyme which are degrade different types of powder particle in place of lysosome. अब अगर हम इसकी साइज को देखें, इसकी जो डायमीटर है
0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। दूसरे ग्रुप में जो है वो है 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइसोसोम। इसकी जो डायमीटर है वो है 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। Chemically, lysosome is composed of proteins, lipids, carbohydrate and various types of enzyme। इसमें different types of generalized proteins भी है, generalized protein और specific protein भी है in the form of enzyme। लिपिड्स भी है एंड कार्बोहाइड्रेट भी है। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन which encloses the lysosome is the lipoprotein membrane। lipoprotein membrane। आगे हम एक एक को डिस्कस करेंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, internal environment of a lysosome is mostly acidic। For example, this is the lysosome। इसकी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये है एसिडिक विद सम सॉर्ट ऑफ पीएच इसकी जो है वो 5। अब ये 5 जो है ये एसिडिक रेंज में आता है। क्यों ये एसिडिक है? लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है इसमें हाइड्रोजन पंप एटीपीएस पंप लगे होते हैं जो इसी एटीपी को कन्वर्ट करता है इनटू एडीपी एंड इन अल्किलिक फॉस्फेट। इसकी रिडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन आर पंप्ड इनटू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ए लाइसोसोम ड्यू टू व्हिच द pH of a lysosome somewhat reach to 5। अब जो pH 5 जो pH है ये है एसिडिक एनवायरनमेंट। अब ये एसिडिक क्यों है आगे फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम internally it contains 40 to 50 different types of enzyme for various food particles or food products as well as for antigens mainly in the form of bacteria, viruses as well as protozoans। अगर बायोलॉजिकल एंटीजन है, अगर फिजिकल एंटीजन है तो उसका अलग रास्ता है। बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोन। एंजाइम split inside the cytoplasm। Now these are enzymes are enclosed in a membrane bounded vesicle। If these are enzymes are inoculated into the cytoplasm, then it degrades all cellular particles। Therefore, the membrane of a lysosome internally impermeable for the enzymes present inside the cytoplasm। बाहर से ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है और अंदर से जो है ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ये है impermeable। Therefore, these are enzyme 40 to 50 different types of enzyme cannot be escape from the internal environment of a lysosome and cannot enter into the cytoplasm। If it's become permeable internally, then all of the enzyme are escape from the internal environment of the lysosome into the cytoplasm, due to which the cell becomes normal and death of a cell becomes occur। होगा हम ऑटोफेजी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब लाइसोसोम जो है मोर इन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? ये है ल्यूकोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स।
white blood cells. ये जो है more migratory and more in number and phagocytic cell है. यानी कि if any antigen enters into our body, then by the chemotactic movement neutrophils उसी को तलाश करता है, उसी एंटीजन के पीछे पीछे हो जाता है. तो ये न्यूट्रोफिल्स ऐसे फर्दर पार्टिकल उसको डाइजेस्ट, उसको इंगल्फ करता है, उसकी डिग्रेडेशन करता है. Therefore, neutrophils contain more amount of lysosome because its main activity is the phagocytosis and autolysis as well as autophagy or intracellular digestion. यहाँ पर डायग्राम में मैंने शो किया गया है. अब ये लाइसोसोम बनता किस तरह है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है. फॉर एग्जांपल, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस. Nucleus are mainly overlapped by the flattened cells of endoplasmic reticulum. DNA inside the nucleus synthesize messenger RNA. Now these messenger RNA are translated by the ribosome, which are attached at a special type of protein at the endoplasmic reticulum, which is known as riboporine proteins. Ribosomes are attached with the endoplasmic reticulum at some sort of point, at certain point which contain special type of proteins which make adhesion molecule with the ribosome. Now these ribosomes get attached with the riboporine protein at endoplasmic reticulum. Now these messenger RNA are translated by the ribosomes into special type of proteins, mainly in the form of lysozyme enzyme, mainly in the form of enzyme OB acid phosphatases, hydrolases, sulfatases, and so on, with 40 to 50 different types of enzyme whose lysosome contains. Now these enzymes are absorbed by the endoplasmic reticulum from one flattened cells to another, and so on. Now these enzymes are passed through the tubules and channels of endoplasmic reticulum. At last it get entry into the smooth endoplasmic reticulum tubules of smooth endoplasmic reticulum. यहाँ पर ये प्रोटीन जो है in the form of bulge या in the form of vesicles इसकी secretion होती है. Now these enzymes, mostly lysozyme enzyme. अब ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये एक वेसिकल में इनक्लोज किया जाता है, which is called transporter vesicles. These are transporter vesicles are transported into the another machinery, mainly in the form of Golgi complex. At the C phase or immature phase or forming phase or convex phase, these vesicles are absorbed for maturation. After entry, these enzymes are transported from one side, from immature size into the mature size or convex phase. Now these lysosomes get budded up from the transfer phase or mature phase of Golgi complex. Therefore, अगर हम इसकी composition को देखें, mainly composed of proteins and lipids. इसकी जो membrane है ये derived है from endoplasmic reticulum. अब endoplasmic reticulum से ये Golgi complex से ये derived है. अब इसी Golgi complex से lysosome जो है, lysosome की जो external membrane है, ये derived है. इसीलिए lysosome mainly composed of lipids and protein as well as carbohydrate, different types of enzymes.
This lysosome is known as a primary lysosome. प्राइमरी लाइसोसोम. अब इसको प्राइमरी लाइसोसोम क्यों कहते हैं? इट कैन नॉट टेक पार्ट एट दिस पॉइंट. इट नॉट अटैच्ड with some sort of fold particles, mainly antigens, as well as its own damaged cell organelle. इसी के साथ ये अटैच नहीं है, यानी कि ये डाइजेस्टिव फंक्शन इस टाइम परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक इसके साथ एक ऑर्गेनेल या फूड पार्टिकल या एक एंटीजन न अटैच हो जाए. इस वक्त तक हम इसको प्राइमरी लाइसोसोम कह सकते हैं. अब ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करेगा? मेनली फंक्शन ऑफ लाइसोसोम फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मींस डाइजेशन इनसाइड द cells. When food particles are engulfed by the process of phagocytosis. For example, this is the food particles. ये क्या है? food particles. यहाँ पर मेम्ब्रेन की क्या होती है? इनविजिनेट टू द इनर साइड टू फॉर्म ए food vacuole. ये food vacuole है. इसी food vacuole को हम क्या कहते हैं? एंडोसोम. एंडोसोम. इसी एंडोसोम के साथ लाइसोसोम get attached with the endosome to form another structure which is called a phagosome. Phagosome. Now these are enzymes which are present inside the lysosome, maybe phosphatases, hydrolases, sulfatases, degrade the food particles into various types of substances. For example, if protein are present here in this phagosome, now proteins will be degraded into small particles, mainly amino acids. If lipids are present inside the phagosome, then lipid will be converted into fatty acids. Fatty acid plus glycerol molecule. If this phagosome contain carbohydrate, then carbohydrate will be degraded into glucose units by the action of amylase, and lipids will be degraded by the action of lipase, and protein will be degraded by the action of peptidase enzymes. Now these are different types of enzymes present inside the vesicles, which is mainly known as the lysosome. However, ये हो गई इंट्रासेलुलर डाइजेशन. ऐसी फेगोसोम्स की डाइजेशन हो गई, ये डाइजेस्टेड फेगोसोम है. सेकंड वन है ऑटोफेजी. ऑटो मींस सेल्फ, फेजी मींस टू ईट. सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल इज कॉल्ड ऑटोफेजी. अब फॉर एग्जांपल हमारे सेल में एक ऑर्गेनेल है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस. व्हेन वी गेट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल सेल्स को एटीपी की जरूरत होती है. नाउ दीस आर एटीपी फॉर the generation of ATP, and another machinery is required, which is called mitochondria. Mitochondria is therefore it is also called powerhouse of the cells. Mitochondria mainly responsible for the generation of ATP, mainly in the process of Krebs cycle as well as electron transport chain. Krebs cycle और electron transport chain के दौरान 34 ATP जनरेट होती है. अब ये 34 ATP अगर इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा किया जाए, then each and every mitochondria will be responsible to generate 34 ATP. Now these ATPs are mainly used in different physiological functions or physical works. जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हो, एक्सरसाइज छोड़ने के बाद सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म करने के लिए, इसकी लाइफ को खत्म करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक ट्यूब जो है वो रिलीज होती है. नाउ दिस ट्यूब फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स become released into the cytoplasm. Released
These tubules of endoplasmic reticulum encircle or overlap damaged or aged mitochondria. Lysosome get enter into these autophagosome. This is called autophagosome. 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 Phagosome by itself are cellular particles. These mitochondria are degraded into different parts. Mitochondria also contain two membrane as well as enzymes. Now enzyme will be degraded into respiratory enzyme into amino acid, carbohydrate into glucose unit, and lipids will be degraded into the glycerol and fatty acid. अब इसकी डाइजेशन हो गई, इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोफेजी कहते हैं. थर्ड वन जो है वो है ऑटोलाइसिस. जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, in embryonic condition the hand becomes paired like. These fingers are not get free from each other. It is most like paired. Now the cells which are present between these two fingers will be degraded, due to which the fingers get separated from each other and freely movable. And second one जो है ये भी again attached with the head region. Second one इसी पाँव के दरमियान जो जितने भी टिश्यूज है ये पाँव भी एक दूसरे से अटैच होते हैं. इसी तरह हेड विल बी अटैच विद द एब्डोमिनल एज वेल एज thoracic regions. अब ऐसे thoracic region और हैंड के या एब्डोमिनल रीजन और इस हैंड के दरमियान जितनी भी टिश्यूज है इसकी ऑटोलाइसिस होगी. ये एज है तो इसके दरमियान जो लाइसोसोम है, इसी लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो बस्ट होती है. तो जितने भी एंजाइम है गेट फ्री फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम एंड गेट एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म. All of the organelles along with nucleus DNA, it means chromosomes will be degraded into small particles and converted into another vacuole which is called contractile vacuole. ये हो गई ऑटोलाइसिस. अब है यहाँ पर एंटीजन. For example, this is the coronavirus or any bacteria. Bacteria, for example, ये है monococcus bacteria. ये bacteria है. When these bacteria are engulfed by the neutrophils or macrophages. ये भी क्या है? ये है white blood cells. White blood cells granulocytes. अब white blood cell engulf the foreign antigen, biological antigen method in the form of bacteria or a coronavirus. These coronavirus are encircled in a semi-permeable membrane which are separated from the cell membrane of white blood cells. ऐसी व्हाइट ब्लड सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इंसर्कल करता है इसी कोरोना वायरस को या बैक्टीरिया को. देन लाइसोसोम डिटेक्ट दिस फेगोसोम. अब ये जो के फॉरेन पार्टिकल है और ये फेगोसोम है, इसको हम कहते हैं हेटेरोफेगोसोम. और ये सेल का अपना जो पार्टिकल्स था, अपना जो ऑर्गेनेल था, जो इसी लाइसोसोम ने इंगल्फ किया गया था, इसको हम कहते हैं ऑटो मींस बाय इटसेल्फ. अगर ये जो फेगोसोम है इसमें फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन एंटीजन है, ऐसी वजह से हम इसको कहते हैं हेटेरो मींस अदर आर डिफरेंट. Then these are lysozyme enzyme get entry into the food particles are heterophagosome. These food particles mainly in the form of antigen. These bacteria or viruses are degraded by the lysosome. If not degraded, कोरोना वायरस से हम बीमार हो सकते हैं. तो इसी दौरान इसी मैक्रोफेज, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैक्रोफेज सेल, इस पे दो सिग्नल जनरेट होते हैं. वन इज द मेजर
histocompatibility complex, major histocompatibility complex type 2, and second one is the major histocompatibility complex of type 1. So now these major histocompatibility complex are special type of proteins, special type of signals, which mainly play an important role in the detection of its own cells and give signal into the helper T cells. Helper T cells contain a receptor site for this major histocompatibility complex. When this major histocompatibility complex gets attached with the helper T cell, then helper T cells secrete 5 types of lymphokine: lymphokine 1, lymphokine 2, 3, 4, and 5. Lymphokine 1, 2, 3 give message into the plasma B cells to synthesize or to generate antibodies. To generate antibodies. And 3 and 4 lymphokine give message into the plasma memory cell या कि memory cells. फॉर एग्जाम्पल हम पोलियो के जो कतरे देते हैं अपने बच्चों को, तो इसी पोलियो में एक वायरस होता है लाइव फॉर्म में और डेड फॉर्म में, ठीक है। तो इसी पोलियो वायरस का जो डेटा है वो डेटा इसी मेमोरी सेल्स में स्टोर होता है। अगेन जब इसी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन होता है पोलियो वायरस से या कोरोना वायरस से जो हम वैक्सीनेशन करते हैं, तो इसी प्लाज्मा मेमोरी सेल में इसके लिए डेटा महफूज होता है, जो बी प्लाज्मा सेल को पेल मैसेज देता है कि अगेन सीक्रेट सच टाइप ऑफ एंटीबॉडी। Then these are antibody kill the coronavirus or bacteria. जब इसी वायरस या बैक्टीरिया इस एंटीजन की डाइजेशन होती है, तो ये डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, some of the food particle substances are again used by these cells. For example, glucose से different types of substances बनते हैं polysaccharide, mainly in the form of glycogen. प्रोटीन्स भी, फॉर एग्जाम्पल केराटिन प्रोटीन भी बन सकते हैं, मायोसिन, प्रोटोमायोसिन, एंड अगर लिपिड्स है तो एडिपोज टिश्यूज में ये लिपिड्स जो है स्टोर भी हो सकता है। अब इसमें जितने भी सब्सटेंसेस है, some sort of substances will be used by the cell, while some sort of substances are again enclosed in a membrane bounded vesicles, which is called contractile vacuole. Then these contractile vacuole will be excreted from the cells through by the process of exocytosis into the intercellular space or interstitial space. Now this is the main function of lysosome, which mainly play an important role in our life. Lysosome is also called either the scavenger, molecular scavenger. Why it is called a scavenger, Macro? फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स बोन फ्रैक्चर हम लोगों को हो सकती है ड्यूरिंग इंजरी और एक्सीडेंट, अल्लाह न करे, तो इसी फ्रैक्चर के दौरान मोस्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स escape from the blood vessels and enters into the intercellular space or interstitial space. यहाँ पर क्या होती है, जब इसी सेल्स की डेथ होती है तो लाइसोसोम जो है वहां पर गेट फ्री फ्रॉम द सेल्स, गेट फ्री फ्रॉम द सेल। लाइसोसोमल एंजाइम गेट फ्री फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। तो वहां पर जितने भी डेड सेल्स हैं, डेड डेब्रिस है, डेड व्हाइट ब्लड सेल्स है, डेड रेड ब्लड सेल्स है, तो इसी व्हाइट ब्लड सेल को ये लाइसोसोम जो है इंगल्फ करता है और वहां पर जो एटीपिक लाइक कंडीशन होती है वो अगेन साफ होती है और जख्म जो है वहां पर अल्लाह हम लोगों को शिफा देता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीनरी लगाई है फॉर द क्लीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब हम कभी कभार, ज्यादा नहीं, कभी कभार माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम भी होती है। माल मींस बैड, यानी कि लाइसोसोम कैन नॉट परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी प्रॉपर्ली।
due to which some tough substances get accumulated inside the cells, due to which these cells cannot perform its specific activity. तो हमारे कोर्स में 2 डिजीज ऐसे हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज. इसकी अनदर किस्म टाइप भी है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 1 डिजीज. हमारे कोर्स में जो इंक्लूड है वो है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 1. ड्यूरिंग हार्ट स्टार्वेशन, ग्लाइकोजन which are mainly stored in our cells are transferred, are converted back into the glucose molecules. यहाँ पर इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एक हार्मोन और एंजाइम की जरूरत होती है. हार्मोन जो है वो है ग्लूकागॉन, मेनली सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियास. अनदर एंजाइम है वो है एमाइलेज. ये एमाइलेज एंजाइम जो है इसी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ मेनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर इसी ग्लाइकोजन की लाइसेजम नहीं होती. मींस ग्लाइकोजन कैन नॉट बी डिग्रेडेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिकॉज in such type of cell lysosome do not contain or a mutant type of amylase enzyme or mutant type of glucagon hormones. When glucagon hormone not secreted in the cells, then this glucagon hormone cannot activate the amylase enzyme to back transfer of the glycogen into glucose molecule, due to which these glycogen get stored. For example, this is the glycogen gets stored in liver cells as well as in muscle cells, liver cells and muscle cells. ये लिवर सेल और मसल सेल्स में स्टोर होता है. ये है माल फंक्शनिंग, बैड इफेक्ट ऑफ लाइसोसोम और नॉन फंक्शनिंग. इसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिजीजेस भी कहते हैं एंड आल्सो कॉल्ड कंजेनिटल डिजीज. सेकंड वन जो है वो है टेसेक्स डिजीज. ब्रेन सेल inside the brain cells lipids accumulate. Why? Because these are lysosomes contain a mutant type of lipase enzyme, due to which the lipase enzyme cannot perform its proper function. Now, lipase enzyme cannot degrade lipids into glycerol as well as fatty acid, due to which the lipids get accumulate inside these brain cells. Now, जब ब्रेन सेल में इसी लिपिड की एक्यूमुलेशन होती है तो इससे मेंटल रिटार्डेशन भी होती है एंड इवन डेथ किसी इंडिविजुअल की हो सकती है. अब ये माल फंक्शनिंग जो है ये है जेनेटिक बेसिस. ये है जेनेटिक बेसिस क्योंकि जितने भी एंजाइम है इसी एंजाइम के लिए हमारे डीएनए पर उसी के लिए एक मखसूस कोडिंग रीजन होती है, एक मखसूस जीन होती है, एक्सांस होती है. तो ये जीन mainly responsible for the production of messenger RNA. When these messenger RNA are synthesized, special tail, cape and उसकी जो स्प्लाइसिंग होती है तो ये कंप्लीट मैसेंजर आरएनए जो है गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म. इनसाइड द साइटोप्लाज्म protein machinery, protein synthesizing machinery mainly in the form of ribosomes get attached on the messenger RNA. Now these messenger RNA will be translated into special type of proteins mainly in the form of special type of enzyme which may be lipase and amylase enzyme. Therefore, it's become mutant if any change takes place in the genetic sequence or a sequence or a gene sequence of nucleotide, then this lipase cannot perform its proper function
cannot perform its proper activity. Now this condition is called malfunctioning of lysosome. इसी वजह से ये दो डिजीज जो है पैसेज डिजीज एंड ग्लाइकोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डिजीज, इसी लाइसोसोम को डीडी ने फर्स्ट ऑफ ऑल रेट और माइस के अंदर स्टडी किया था. रेट माइस लीवर सेल. तो इसी रेट और माइस के लीवर के सेल में लाइसोसोम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता था वो मैंने आप लोगों को इसी लेक्चर में बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को समझाया. होपफुली आप लोग इस टॉपिक को समझ. आज के लिए यही काफ़ी है. नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.